September. These are the topics that I'll be doing with you. So the first big topic that we have will be dry docking. Grounding. Then ट्रिम ए, ये सेकेंड मेट्स का आ गया, ये मैं सेकेंड मेट्स की रिवीजन करा दूंगा. ट्रिम ए, you will remember this from your second mates. Then we will be going on to kinship, question number 84. Specifically one question. This is combined list and trim question. ये काफी पॉपुलर है क्वेश्चन, आता है जरूर. So we'll be doing this. And trim table, trimming tables. Kinship. ये 5 टॉपिक हैं जो हम इस मंथ में हम खत्म करेंगे. ये ड्राई डॉकिंग एंड ग्राउंडिंग जो है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे. ये हम सुब्रमण्यम्स वॉल्यूम 2 से करेंगे. नटशेल वॉल्यूम 2 नटशेल से करेंगे. एंड kinship and past papers. सुब्रमण्यम वॉल्यूम 2 नटशेल, इधर से हम थ्योरी लेंगे, किनशिप पे भी जाएंगे एंड पास्ट पेपर्स पे करेंगे. दिस इज हाउ these are the 5 टॉपिक्स हमारे इस मंथ में हम कवर करेंगे. All right, let's start with dry docking. So dry docking. So let's make a diagram. So make a diagram like this. Make a table, 3 columns. First column is waterline number. Second column is equation. Third column is entrance. So let me know when you're ready. So this water level के बड़ा नीचे क्या लिखा सर आपने? Meters? Waterline number. Numbers. Waterline number. Okay. Equation, entrance.
Okay, sir, we can proceed. Yes. Yeah, okay. So the preparation for dry docking begins a good 6 months earlier than the actual dry docking. Prior to the actual dry docking, a series of communication happens between the ship and the dry dock, wherein the dry dock wants the ship to enter in a particular condition, with a particular trim, with a particular draft. And the ship has to comply with that. So a series of communication happens between them. The reason for that is because the ship has to be stable at all times. And she should have a positive GM through and through. Now, there are two types of dry dock. One is called as a graving dock, that is a cemented structure. The other is called as a floating dry dock, where the dry dock itself is a ship, and our ship becomes the cargo of that ship. So we get loaded on board that ship, and therefore the dry dock plus our ship together as a system becomes a floating ship. So that is called as a floating dry dock. So graving dock, floating dry dock. One can go in either one depending on the availability. Now, let us say this vessel has to come into a dry dock. The drafts agreed upon are forward 4 meters, aft 5 meters. So trim is 1 meter by stern. Now, the blocks in reality are all along the length of the ship, but we are concerned only about the aftmost block and the forwardmost block for stability calculations. इसके बीच में in reality there are blocks in between also. So waterline number 1, we are calling this as waterline number 1. The displacement W1 is acting downward, and the buoyancy is B1 acting upward, and the vessel is afloat. The displacement acting downward through the center of gravity, buoyancy, force of buoyancy equal to W displacement acting vertically upward through the center of buoyancy, and therefore the vessel is in stable equilibrium. Vessel is afloat. Trim is 1 meter stern. तो इसको रिपीट करेंगे सर, ये क्या है सर, ये मतलब W1 और ये B1? This is the displacement of the vessel. Okay. So अगर मेरा जहाज का displacement 50,000 है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू डाउनवर्ड एक्ट करेगा. Yes sir. और buoyancy जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, equal to the displacement 50,000. Yes sir. Through the center of buoyancy. So W1 acting downward is equal to B1 acting upward. One number is representing the volume, the water line. ठीक है, is that okay? Yes. Is it making sense? सर ये थर्ड कॉलम में से क्या लिखा है? इनफेरेंस क्या लिखा है? इन्फ्लुएंस. Inference. इन्फ्लुएंस. Inference. 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 Okay. So what do we infer from this? Trim 1 meter by stern है. Observations क्या है हमारी? It is floating in the water without touching any block. Correct. So trim is 1 meter by stern. Okay. अब जब हम एंटर करें तो there was some dock water height. Dock water height is the height from the top of the blocks to the water line. This is known as dock water height. Top of the blocks say water line tak. Let us say dock water height is 10 meters. So how much is my UKC? 5 meters. 5 meter. Okay. UKC is 5 meter. Now the lock gates are closed. Once the vessel is firmly in position, lock gates बंद कर दिए जाते हैं. And the dry dock begins to pump out the water. तो जब पानी नीचे जाना शुरू करेगा तो ड्राफ्ट क्या होगा?
Sir, could you please repeat? Same till the water is अगर ड्राफ्ट सेम रहेगा, यूकेसी कम होगा। ड्राफ्ट सेम रहेगा, यूकेसी कम होगा। तो अगर ड्राई डॉक पानी को पंप आउट करना शुरू कर देता है तो पानी नीचे जाना शुरू कर देगा, डॉक वाटर हाइट कम हो जाएगी, यूकेसी कम हो जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट सेम रहेगा। डज एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, but at certain levels. करेक्ट। जब जैसे शुरू किया उसने, हाँ, सर रिपीट start- करेंगे सर? स्टार्टिंग करी उसने ड्राई डॉक ने पानी को पंप आउट करना, तो लेट अस से 1 मीटर पानी नीचे गया। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, ये रिपीट करेंगे? ड्राफ्ट सेम रहेगा ये वाला टॉपिक दोबारा? सो अगर मैंने 1 मीटर पानी ड्राई डॉक ने नीचे कर दिया, इफ द डॉक वाटर हाइट इज 9 meters, ओके सर। so if the dock water height is 9 meters, UKC will be 4 meters. ये करेक्ट। Draft कितना होगा? 5 draft will remain same 5 meter. Drafts will remain the same. Forward will be 4, aft will be 5. Just right. फिर ड्राई डॉक ने और पानी पंप आउट किया और किया, यूकेसी और कम हो गया। एक टाइम आएगा जब यूकेसी 0 हो जाएगा। दैट मींस आफ्ट ने ब्लॉक को टच कर दिया। उस वक्त फॉरवर्ड विल स्टिल हैव सम वे टू गो। Yes, it's about 1 meter. इज दैट करेक्ट? Yes, Yes. sir. उस वक्त फॉरवर्ड विल स्टिल हैव सम वे टू गो। Yes, sir. ओके, उस वक्त डॉक वाटर हाइट क्या होगी? 5 मीटर। 5 meter. उस वक्त डॉक वाटर हाइट 5 मीटर है। आई एम कॉलिंग दैट एज वाटर लाइन नंबर 2। दिस इज वाटर लाइन नंबर 2। वाटर लाइन नीचे आ गई है। आफ्ट ब्लॉक टच कर गया है, फॉरवर्ड ने अभी टच नहीं किया है। ड्राफ्ट क्या है? सेम, That will be same 4 and 5। डॉक वाटर हाइट क्या है? 5 5 मीटर। meter. यूकेसी क्या है? 0। 0. डू यू ऑल एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट? Yes. Yes, sir. किसी को ये चीज समझ sir. नहीं आई? सो इसको हम वाटर लाइन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं W2 डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू ब्रावो 2 एक्टिंग अपवर्ड प्लस, अब एक अपथ्रस्ट फोर्स है P जो कि शुरू हो गया एक्ट करना। सो P इज अपथ्रस्ट फोर्स which is exerted by the aft block onto the hull of the ship. So it is acting at the stern frame. ये stern frame पे एक्ट करेगा this upthrust force, जहां पे aft block ने फर्स्ट कॉन्टैक्ट शिप के साथ किया। So since P is a force, it is acting in the same direction as the buoyancy. So उसको मैं एक नाम दे रहा हूं P2 एक्टिंग अपवर्ड। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है वाटर लाइन 1 पे P1 Was 0. was 0 बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करता था, उस वक्त टच नहीं किया था उसने। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ sir. एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड इट? Got it, sir. ये वाला पार्ट। So this P will act exactly opposite to buoyancy. नॉट ऑपोजिट, इन द सेम डायरेक्शन एज buoyancy. Same. To the center, not center of buoyancy. See, the force of buoyancy is B2. It is acting on the stern. This is acting on the stern, जहाँ पे छू रहा है वो। तो अगर ये जहाज है, अगर ये जहाज है तो ये ब्लॉक है, तो ये इसको छू रहा है, तो ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। That way. Is that okay? Yes, sir. सर ये इक्वेशन सर आपने जो लिखी है ना W2 इज इक्वल्स टू लिखा है क्या? इक्वल्स टू या W2 equal to W2 with an arrow downward equal to हाँ, buoyancy 2 P2 acting हाँ, upward plus P2 acting upward प्लस है, ओके। plus P2 acting upward. So
कहने का मतलब ये है वाटर लाइन 2 पे आफ्ट पहली बार शिप को टच कर ब्लॉक को टच करता है। सो वाटर लाइन 2 को हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड commences. Critical period has commenced. Means as soon as the thrusters force start acting on the stern, the movements becomes critical period. Correct. Absolutely right. The critical period has commenced. Is this okay? So when does critical period commence? When aft has touched the block for the first time. What of that dry dock? When aft has touched the block for the first time. Critical period has commenced. अब इसके बाद जो भी होगा, ये जैसे जैसे वाटर लाइन नीचे गिरेगी वैसे वैसे ये पी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पी बढ़ेगा ये जहाज की ये ट्रिम जो है इवन कील की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। Are you with me? Yes, sir. Okay. So that means waterline 2 के बाद trim will be less than equal to 1 meter. अब 1 मीटर से कमती होनी शुरू हो जाएगी। Do you agree on this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So अगर सपोजिंग मेरा जहाज, अच्छा, जैसे जैसे नीचे जाएगी वाटर लाइन वैसे वैसे बॉयंसी कम होती जाएगी। हाँ सर, बॉयंसी कम होती जाएगी, पी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। Right, sir. और टोटल जो ग्रैंड टोटल है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा जो कि कांस्टेंट है। Right, sir. सर कैसे रहेगा, एक बार एक्सप्लेन करेंगे ग्रैंड टोटल? भाई अगर मेरा जहाज 50,000 टनर है तो मेरे जहाज की डिस्प्लेसमेंट तो 50,000 ही रहने वाली है ना। डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो इक्वेशन नंबर 1 में 50,000 वाज इक्वल टू 50,000, इक्वेशन नंबर 2 में 50,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस लेट्स से 10,000, Okay. इक्वेशन नंबर 3 अभी आगे आएगा, व्हाट 50,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 20,000, मतलब ये डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है। Okay, buoyancy reduce हो रहा है धीरे-धीरे because it will initially come to zero later on. राइट। और Sir, buoyancy reduce होने का वजह जो है कि because of it touches the block. तो buoyancy रिड्यूस होने का वजह इसलिए है क्योंकि मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम कम हो रही है। पानी निकाल रहे हैं हम। मैं पानी को निकाल रहा हूँ ना ड्राई डॉक का, Yeah. Yes. मतलब ड्राई डॉक निकाल रहा है, मैं नहीं निकाल रहा, सॉरी, Yeah. ड्राई डॉक निकाल रहा है। तो No, अगर पानी निकल रहा है. पानी निकलता जा रहा है तो मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम भी कम होती जा रही है, Yes. sir. Buoyancy कम हो रही है. तो buoyancy कम हो रही है, Yes. लेकिन वो कॉम्पेंसेट हो रहा है पी से, पी बढ़ता जा रहा है। Yeah. So dry docking is a slow progression of transfer of weight of the ship to the block, slowly in a gradual manner. Originally, the entire weight of the ship was taken over by the water. Now, gradually, the ship is transferring the weight onto the blocks in a slow manner by reducing the level of the water. Is that okay? Yes. So waterline 2 critical period has commenced. अब ड्राई डॉक पंप आउट करता है, फिर आता है वाटरलाइन नंबर 3। अब जैसे जैसे ये डाउन जाएगा पानी, जहाज डाउन जा रहा है तो नेक्स्ट ब्लॉक टच करेगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉक टच करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, और एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड विल टच द ब्लॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. सो वाटरलाइन नंबर 2 में मेरा यूकेसी कितना था? 0. 0. My initial draft aft was equal to dock water height Right, sir. At number 2. at what number 2 was equal to, let's say, 5 meters. Do you agree to this statement? Yes, sir. Okay. Initial draft aft
is equal to the dock water height is equal to the 5 meters. Let's say अब मैं आ गया वाटर लाइन नंबर 3 पे, अब मेरा आगे भी टच कर गया बाव, यू कैन सी अब मेरा 0 ही चल रहा है. सो अब मैं वाटर लाइन नंबर 3 पे आ गया, ये आ गया वाटर लाइन नंबर 3, ये वाटर लाइन नंबर 3. ओके, सो W3 acting downward is equal to buoyancy 3 acting upward plus P3 acting upward. What is the trim at this stage? 0. Even Everybody agrees on it? 0. 0. Okay. What will be the UKC at this stage? So 0. All right. The draft forward will be equal to draft aft. Do you agree on this? Yes. Yes, sir. Okay. This will be equal to dock water height at this stage. Do you agree on this? Yes. Yes, sir. Okay. This will be equal to the hydrostatic draft at this stage. Do you agree to this stage? Draft Yes, sir. forward. Because मेरी trim 0 है, तो मैं even key लूँ. अगर मैं even key लूँ, तो forward draft will be equal to aft draft, will be equal to the dock water height, will be equal to the hydrostatic draft. कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से मैं कोई भी एक चीज निकाल लूँ, तो मुझे बाकी चारों चीजें मिल गई. हाँ सर. So what is the last one? Hydrostatic draft. Hydrostatic draft. सर इस टाइम पे ड्राफ्ट 4 मीटर है ना? नहीं, इस वक्त इस ड्राफ्ट टाइम पे नहीं, इस वक्त ड्राफ्ट जो है 4 से ज्यादा होगा. अब क्यों ज्यादा होगा वगैरह वो सब मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में, बट 4 नहीं होगा. अच्छा 4 नहीं होगा. सर इसमें डेक्लिविटी को कंसीडर नहीं करेंगे? अभी वो डेक्लिविटी तो लाओ ही मत, अभी कुछ भी मत करो, वो बहुत आगे चला जाएगा. तो डेक्लिविटी मैं लास्ट में करूंगा. Don't bring declivity into the picture at all. At this point of time, all the heights of the blocks are the same. ठीक है. You were saying कि ड्राफ्ट 4 मीटर हुआ कि नहीं? Well, ड्राफ्ट जो है दो चीजें हो रही हैं. एक तो पानी नीचे जा रहा है और एक जहाज की ट्रिम चेंज हो रही है. तो और एक मीन राइज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द पंपिंग आउट. द शिप इज बॉडीली राइजिंग विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. एंड एक टीएफ चेंज इन ट्रिम फॉरवर्ड वो प्लस भी हो रहा है साथ में. तो द ड्राफ्ट विल नॉट बी 4 meters बट इट विल बी 4 plus समथिंग. अभी क्या है समथिंग, विल कम टू दैट शॉर्टली. ठीक है, इज दैट ओके? ओके सर. यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके. दिस water line 3 is known as when the bow is about to touch the block forward is known as critical instant. The instant at which the bow is about to touch the block forward is known as critical instant. And the moment the bow has touched down, critical period ends. So critical instant and critical period ending happens at the same time, all at waterline number 3. But there is a technical difference between the two. The critical instant is a split second before critical period ending. How do you define critical instant? It is the instant at which the bow is about to touch the block. And the moment the touchdown happens, critical period has ended. ये समझ में आया? So that means the critical period will be there till the time bow touches. Absolutely right. Absolutely right. It doesn't matter whether it start touching the other blocks, right? At the end and on the stern it touches the first block, then gradually it starts touching the other block before touching the forward one. So till that time also the critical period is there. Correct. So critical period, how do we define? It is the time period. It is the period from which when the aft touches the block for the first time
to the forward touching the block is known as critical period. That means from waterline 2 to waterline 3. Okay, is that okay? ये critical instant and critical period difference समझ आ गया? हाँ सर. Yes, sir. Anybody has any questions on this? तो इन दोनों का difference भी पता चल गया. Instant is a split second before critical period ending. Both are happening at waterline number 3. Okay. This critical period end and critical instant at the same time, or be just about when it touches the ball, first block? See, critical instant occurs a split second before critical period ending. Okay. Both are occurring at waterline number 3. Okay. Trim is 0 at that time in both the cases. The only technical difference is critical period instant is when the bow is about to touch. Critical period ending is when the bow has touched. ये फर्क है. Thank you. हाँ जी. Is this okay? इसके बाद ड्राई डॉक फिर पंप आउट करता है पानी को और एक वाटर लाइन आती है वाटर लाइन नंबर 4 और फिर एक आ जाती है वाटर लाइन नंबर 5. वाटर लाइन नंबर 4 पे W4 is equal to Bravo 4 plus Papa 4. अच्छा, W3 में मैं ये वाटर लाइन 3 में एक चीज लिखना भूल गया. Bravo 3 is less than Bravo 2. Papa 3 is greater than Papa 2. W1 is equal to W2 is equal to W3. यानी कि displacement remains constant. Bravo is constantly decreasing. Papa is constantly increasing by the same differential. By the same differential. W4 is equal to Bravo 4 plus Papa 4. This is waterline number 4. Inference में आएगा. Trim is 0 at that stage. Bravo 4 is less than Bravo 3. Papa 4 is greater than Papa 3. And W3 is equal to W4. Draft forward is equal to draft aft is equal to dock water height is equal to hydrostatic draft. This is waterline number 4. Waterline number 4 का significance क्या है मैं अभी बाद में बताऊंगा. अभी मैं खाली इक्वेशन लिख रहा हूं. This is waterline number 4 and waterline number 5 W5 is equal to buoyancy 5 which has become 0 plus Papa 5 which is at the maximum. So at waterline 5 when the dock water is at the keel level buoyancy is 0, Papa is maximum, draft is 0. Draft is 0. Draft forward is equal to draft aft is equal to 0. So the whole process of dry docking is buoyancy starting at 50,000 becoming 0, P starting at 0 becoming 50,000. That is the whole process of dry docking. तो ये B5 equals to 0 है ना? B5 is 0. 0 हो गया because there is no buoyancy now. कोई underwater volume बची नहीं. So basically the dry docking is all about a sequence from going from 1 to 5. We go in this sequential manner. W4 and W5 में this direction will be not, or it will be the same as before? Directions will be the same as before. जो पहले चल रही थी. Okay. वो same चल रही है. In 5 as well. हाँ. So they're all W's are all acting downward.
left hand sides are all acting downward, right hand sides are all acting upward. Any questions so far? Okay. Now, after waterline 2 is achieved, that is critical period has commenced. The dry dock. Please put it on mute. Bharat, please put yourself on mute. ऐसे अच्छा लगेगा मैं मोमोस टाइप पतली की सड़कों पे घूम रही हूँ और मेरी मम्मी चाहती कि मेरी शादी हो जाए तो मेरी मम्मी ऐसे दूल्हे लेके आ जाती कि देखो बेटा देखो कितना सुंदर है ये Okay. Now, a question. Why does dry dock stop pumping out water after waterline 2? ड्राई डॉक जो है ये वाटरलाइन 2 के बाद, दैट मीन्स जब क्रिटिकल पीरियड चालू होता है उसके बाद थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए पंपिंग आउट, पानी का डॉक वाटर को पंप आउट करना बंद कर देता है. Does anybody have any answer why? So we will check that the ship has a GM, sufficient GM, because now the critical period is about to start. GM और वो सब तो पहले कैलकुलेट हो चुका है. अब तो कोई कैलकुलेशन दोबारा करते ही नहीं है, करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास. वी आर ऑलरेडी इनटू इट नाउ. सो चेकिंग ऑफ अ GM इज नॉट डन एट दिस स्टेज. तो ब्लॉक मतलब इन लाइन है कि नहीं है? सेंटर लाइन इज लाइन. बिल्कुल ठीक. हाँ, सो अलाइनमेंट टू चेक the alignment of the vessel with respect to the blocks. बिल्कुल ठीक है. अलाइनमेंट चेक होती है. और क्या चेक होता है? जैसे अलाइनमेंट में और क्या चेक करते हैं? अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शंस चेक करते हैं. अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शन, बॉटम प्लग्स पोजीशन. क्या है वो सब? बॉटम प्लग्स, सी चेस्ट, ओवरबोर्ड डिस्चार्जेस, एनोड्स, डॉपलर लॉग, एको साउंडर, ट्रांसड्यूसर. और क्या? व्हाट एल्स इज देयर? अंडर वाटर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या है? और बाउ थ्रस्टर्स. सो ये सारी चीजें चेक होती हैं. और क्या चेक होता है? Any other sections and overboards. एब्सोल्युटली राइट. एनी अदर सेक्शंस, या फिर अगर कोई प्लेट्स को क्रॉप एंड रिन्यू करना है, एनी प्लेट्स विच नीड टू बी क्रॉप्ड एंड रिन्यूड, किसी कोई सेक्शन को काटने के लिए आप आए हो, वो चेक होता है. और इस वक्त अंडर वाटर CCTV रिकॉर्डिंग ली जाती है हल की फॉर एनी डिफॉर्मेशन, एंड दिस कुड बी डन यूजिंग डाइवर्स, स्कूबास, ROVs, submersibles, submarines, submersibles, or remote operated vehicles, or scubas, or divers, or underwater CCTVs, depending on the technology which is used. So recordings of the bottom hull are taken. So that सर ये पॉइंट 2 में फर्स्ट वर्ड क्या है? underwater obstruction. Underwater obstruction. सर ये CNR और ये ROV क्या लिखा है? Is crop and renew. Any plates which need to be cropped and renewed. Crop and renew. Yeah, any plates which need to be cropped and renewed. सर ये नंबर 2 रिपीट कर देंगे सर, पूरा क्या क्या है? Underwater obstructions, bottom plugs, sea chest, overboard discharges, anodes, Doppler log, echo sounder, bow thruster, and any plates which need cropping and renewing.
जिसके लिए आप अंदर डॉक में घुसे थे। सर ये फर्स्ट पॉइंट में जो चेक ये भी सर डाइवर्स ही करेंगे सर? नहीं, ये दिस इज डन बेसिकली फिजिकल अलाइनमेंट चेक होती है, पोर्ट टू स्टारबोर्ड अलाइनमेंट बेसिकली। तो डॉक अपनी लाइन देता है, अपनी डॉक वायर देता है, एंड उससे वो अलाइनमेंट को चेक करता है। तो ये डॉक मास्टर करता है। ओके सर। सर ये नंबर 2 के पॉइंट्स जो है बॉटम प्लग्स, सी चेस्ट एंड ऑल, ये पंपिंग को रोक के करने का क्या फंडा है सर? भाई आपका डॉक जहाज डॉक में आ गया, ऐसे बैठ चुका है जी सर। अब ये नीचे में ब्लॉक्स तो ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे ना। हाँ सर। तो अब चेक करने की जरूरत है कि ये ना हो ना कि अगर अब जहाज बैठ गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। इस स्टेज पे अगर जहाज को पोर्ट स्टारबोर्ड अलाइनमेंट करनी है या ब्लॉक्स को शिफ्ट करना है अंडर वाटर, तो ड्राई डॉक करेगा ना ये सारे काम। ओके सर, Yes, मतलब sir, like, ये पॉइंट्स उन ब्लॉक्स पे रेस्ट ना करे या टच ना करे वैसे वाले। बिल्कुल ठीक। ओके सर, बाकी डॉकिंग प्लान एंड लोकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर और पहले भेज देते हैं हम लोग सब कुछ। ये सारा जीए प्लान, डॉकिंग प्लान सारा कुछ पहले जा चुका होता है। जस्ट टू कंफर्म दैट ऑल एज पर आवर प्लान, राइट सर? Come again? Just to confirm that all sitting as per our plan. The ship is sitting on the block. Correct. To confirm that the ship is sitting as per on the blocks as per the plan. That is why. ठीक है, is that okay? Thank you sir. चलिए नंबर 3 का लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? Underwater CCTV, divers, scuba, and remote operated vehicles or vessels. Okay, thank you sir. Remote operated vessels. स्कूबा क्या है? Scuba divers होते हैं ना, scuba underwater you have the submarines also scuba, you have the divers also scuba. Okay sir. And the remote operated vehicle. तो ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है कि उस ड्राई डॉक की क्या क्या टेक्नोलॉजीज उनके पास है। तो जब ये सब चेक हो जाता है उसके बाद ड्राई डॉक फिर से पानी चालू, ये इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं इस सारे कार्यक्रम में। दिस टेक्स अबाउट 4 आवर्स एंड उसके बाद ड्राई डॉक फिर रिज्यूम करता है पंप आउट, और फिर वाटर लाइन नंबर 3 पे जाता है, और फिर ये सिचुएशन आती है, फिर उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आती है। ठीक है, इज दैट ओके?